माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को, जांबाजों को याद करते हैं और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। Indeed, a solemn homage by a grateful nation at a national monument built to honor and remember and respect our soldiers. As soon as the Prime Minister alights at the National War Memorial, he will then be escorted to the area where he will place the wreath after having met the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Raksha Mantri and the Rajya Raksha Mantri, the Defence Secretary and other dignitaries who were present there. A solemn homage, a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect, gratitude and patriotism. And our first glimpse of the Honourable Prime Minister as he's seated in his vehicle and soon to alight, his beautiful turban with all the colours that really represent the diversity of our country. Greeting the three chiefs, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. The sacrifices of our soldiers did not go in vain, as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the Salami Shastra again. The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers representing the armed forces, this year commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। Antarjanagan! Salame! Shast! Antarjanagan! Shok! Shast!
Guards! Antarjana Guard! Salame! Shast! Antarjana Guard! Bajam! Shast! The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Ganghas, ordering Salami Shastra or salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, eclipsing words, till nothing is heard. Peaceful, tranquil, some hearts beating, but some now still. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life with no beginning, no end, and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil dedication of a lifetime. And that's what it is for our men and women in uniform. The Prime Minister now moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे इन वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा सर्वोच्च बलिदान देकर की है। तन और मन समर्पित करने के बाद प्राण भी समर्पित कर दिए इन अमर शहीदों ने। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए। तुम तो मुझे जानते न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है? हां, तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है। हमारी मातृभूमि एक है। भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं। अमर जवानों का स्मरण, उन वीरों को नमन जो लौट के घर ना आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए। Today, national pride colors all celebration. The Indian tricolor, a symbol that brings us all together, that unites us as we bow our heads in reverence and gratitude to all our men and women in uniform who put duty before desire, nation above personal gain, and pride in serving the country before any other notion of comfort. And here at the National War Memorial in New Delhi, as the Prime Minister a short while ago paid homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, the flame of sacrifice, valor and courage burns strong, giving life to tribute, light to inspiration, and love to national pride. Leadership, they say, is not about standing out, it's about hanging in, not giving up when the odds are stacked against you. And every martyr that we honor today exemplifies this quality. True respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart. Raksha Mantri, seeing the Prime Minister off from the National War Memorial, and now all action will shift and all attention will move to Kartavya Path at the saluting base. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में
74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी। In front, we can see the central dome, and here we come back to Kartavya Path, where the Prime Minister has arrived at the saluting base. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद। प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह, करतल ध्वनि, यहां जनसमूह में बहुत उत्साह। The Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the 3 service chiefs, and all the other dignitaries here. And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the 2 enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect and warming the weather, the hearts, and of course, the feelings. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। स्वागतम की धुन गूंजती हुई, स्वागतम जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने शब्द दिए और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने, और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। 9 feet, 9-inch long lances. Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the Chief Guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी का परिचय इस समय
सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए। In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment. As Rajpath will resonate to the 21-gun salute, the national anthem will echo. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक। A proud moment for President Draupadi Murmu. This is her first Republic Day as President and Chief of the Armed Forces, the Supreme Commander. We were indeed honored to have in our midst The VIP carcades have started arriving, and first the President of India will be seen off by the Prime Minister and the Defence Minister. महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी विश्व के राष्ट्रपति महोदय की गौरवमयी उपस्थिति Days like today offering us possibilities to step out of our routine lives and touch this wondrous fusion of mind, heart and spirit that define our nationhood.
our chief guest, along with our president, depart from the saluting base. In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and tasks is that what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, history, tradition, ceremonial protocol all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered many storms. Institutions need to be nurtured organically. They go beyond the individual, and that's the reason tenures and terms are linked to people, not institutions. A healthy democracy resting on transitions of people, parties and power. The Defence Minister, Shri Rajnath Singh, seeing off the dignitaries. माननीय राष्ट्रपति जी और हमारे मेहमान मिस्र के महामहिम राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं अब कर्तव्य पथ से। भव्य गणतंत्र दिवस समारोह यादगार बनता हुआ गणतंत्र का उत्सव अपने सबसे निखरे हुए रूप में देश और दुनिया के सामने है। भारतवासी गर्व करें ऐसा शानदार समारोह। विदेशी मेहमान प्रफुल्लित, अपार गौरव और प्रेरणा के अनेक पल भावनाओं की एक एल्बम सी बन गई है। माननीय राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं। हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। दुनिया में भारत की आवाज अब ध्यान से सुनी जाती है और मानी भी जाती है। घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर। So though the parade concludes at Rajpath in the capital today, the celebrations do not end, and we as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and of course a unity that bridges differences and challenges divisive forces. After the President's departure, we now await the departure of the Vice President of India. भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी समारोह पूर्वक प्रस्थान कर चुके हैं। कर्तव्य पथ के ऊपर रायसीना पहाड़ी की ओर अग्रसर होता हुआ ये काफिला इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास रही है, यादगार रही है। विशेष आमंत्रित अतिथियों के अलावा समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले सामान्य नागरिक भी इसमें शामिल रहे। विशेष तौर पे वे श्रमयोगी जिन्होंने पुनर्विकसित कर्तव्य पथ को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और श्रीमती सुदेश धनखड़ रवाना हो रहे हैं कर्तव्य पथ से। सही अर्थों में श्रमयोगियों की कर्तव्य पथ पर उपस्थिति राष्ट्र निर्माण के उत्सव में जन भागीदारी की मिसाल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है आज के नए भारत की नई अनुभूति, नया उद्घोष। India's Republic Day celebrations are an occasion to rejoice in the rituals of democracy, whose norms are finally laid out in the Constitution. For many Indians at home and abroad who take pride in their Constitution, the recognition of their country as the world's largest democracy, it is yet another opportunity to fly the tricolour at home and take pride in all things Indian. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, acknowledging the greetings of the people who are assembled here as he moves forward
greeting them on the 74th Republic Day parade. You've got a vast number of people who've been invited here as special guests. First time being included in the largest spectacle, and some of them, as was mentioned before, are the Shram Yogis, the ones who have worked to show us what the vista looks like today. They're still continuing their work with the ongoing construction of the new parliament, the enclaves, the executive enclaves of the Vice President and the Prime Minister's office and residence, and other important buildings of the power corridor, as it were, of the nation. The pride and elan of the parade over these years is impossible to forget. The discipline, the turnout, the military bearing of the personnel participating in the parade all add to the collective spirit of national pride. And the freeze and fog of the January mornings in Delhi notwithstanding, the show goes on, and the Prime Minister here very enthusiastically greeting and acknowledging the contribution of all these Shram Yogis who are here. Street vendors, milk vendors, people who are all helping us in making a life and contributing to the nation. Contact, connect and communicate. The mantra of governance, Prime Minister Narendra Modi reaching out, waving out, in more ways than one, to all present here. What an exciting moment for all of them to see their Prime Minister so close up. And today, as we participate in this festival of progress and prosperity, days like today remind us that we are not just individuals, but a part of a larger collective, a whole, that is definitely greater than just the sum of its parts. People, cornerstone of organic renewal. The Prime Minister recognizing this, acknowledging this, and greeting the people on the 74th Republic Day celebrations. प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ के दोनों ओर जो दीर्घाएं हैं, वहां जाकर उन्होंने मौजूद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। और इस यादगार गणतंत्र दिवस समारोह को और भी यादगार बना रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो यहां आए और प्रधानमंत्री को इतने नजदीक से वो देख रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं, पिछले 3 वर्षों से दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार हालात अब बेहतर हैं और जिस तरह की लड़ाई भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ी है, उसका उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर 220 करोड़ से भी ज्यादा खुराकें दी हैं और इस समय जब हम बात करें इस समारोह को मनाने की, तो बिना कोविड प्रतिबंधों के हमने अपना ये उत्सव आज मनाया है। In the recent past, despite the pandemic years, the country has witnessed resurgence in all sectors with the launch of numerous schemes by the government to highlight ease of living, ease of business and digitalization towards a holistic growth of the country. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, still acknowledging the greetings and cheers of the people here who still want to reach out and convey to him their pride and happiness in celebrating this magnificent parade. At this moment of celebration, it would be nice to remember that on this cloudy 26th of January, we began the celebrations with paying homage to the Amar Jawan.
And even right now, as we are celebrating here in the capital, our men and women in uniform stand guard, keeping a watchful eye, protecting our land over ice-capped mountains and snowy slopes and dusty dunes that seem to go on endlessly, vigilant, strong and capable, so that we may carry on with our lives like we are doing right now. It must be a very emotional moment for the Prime Minister to see the public responding to him with such joy. Celebration writ large in every movement of his. इन तस्वीरों को देखते हुए मौसम और कोहरे का हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूर देखते हैं तो वहां विजिबिलिटी काफी कम, लेकिन फिर भी आज जिस शानदार गणतंत्र उत्सव के हम सब गवाह बने, वो हम सबको याद रहेगा, हमारी यादों में बसा रहेगा। प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के बाद, इस समारोह के बाद सीधे सपाट रास्तों में मोड़ कभी कभी बदलाव की धुरी बन जाते हैं। देश और व्यक्ति की यात्रा में सही मार्ग का चयन भविष्य तय कर देता है। हमें गर्व है कि हमने वक्त की उंगली को थामा है। अब विकास पथ ही कर्तव्य पथ है। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद।